In the heartland of India, where farmers tirelessly nurture the land that sustains us all, they grapple with numerous challenges to sustain themselves. Chief among these is the unpredictable nature of the weather, a formidable adversary that casts uncertainty over their livelihoods. India has 18% of the world population, but only 4% of its water resources, making it among the most water-stressed in the world. As per Niti Aayog, large number of Indians face high to extreme water stress. Water scarcity, further exacerbated by the erratic weather conditions across India, is a serious issue, and it has a huge impact on water availability, especially in the water-stressed regions in India. We at Pernod Ricard India are committed towards our water stewardship program, and a subset of that stewardship program is WAL, which is Water, Agriculture and Livelihood. And through that program, we ensure in the communities a circular and a sustainable way of water usage. Also, along with the water efficiency and usage aspect in the community, we also have a watershed management program which takes care and manages the replenishment of water in the aquifer from where all the stakeholders along with us draw out that water, and also managing the health of these watersheds as well as the aquifer at large. The result of these initiatives can be gauged through the improved agricultural practices and livelihoods of local farmers. गांव में पहले बारिश बहुत होती थी, लेकिन स्टोरेज की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जितनी भी बारिश होती थी वो बह जाती थी, पानी निकल जाता था। तब खेती करने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। पर्नोड रिकॉर्ड इंडिया कंपनी जो है उसके माध्यम से अंकुर उदय प्रोजेक्ट यानी TNS फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। वो हमें खेतकरी जितने भी है उनको सहायता करते हैं। पहले पानी जनवरी फरवरी में ही ख़त्म हो जाता था, लेकिन अभी मई तक चलता है। पहले कुछ महीनों तक ही सीमित था खेती करना, लेकिन अभी 12 मई तक खेती कर सकते हैं वो लोग। अब जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ा है ना, तो उससे हम अंगूर लगाते, टमाटो लगाते, गोभी, फ्लावर जैसी खेती कर रहे हैं। और क्या होते हैं कि वो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। We at Pernod Ricard India are constantly working towards water stewardship to save, store and replenish water with a stakeholder-inclusive approach. We work in some of the high-risk water-stressed areas across the country. Till date, over 1,400 structures have been constructed, replenishing 3,500 million liters of water. These structures are primarily rainwater storage and rainwater harvesting structures like check dams, KBN, polyponds, ponds, CCT and various other area treatment structures. And then, the villagers are entrusted with the responsibility of the sustained upkeep of the water structures provided. In our water stewardship journey so far, we've been working with communities across water-stressed geographies to have better governance around water structures. Whenever we enter a geography, we create water user committees that strengthen the functioning and ensure sustainability of any water structure that has been created as part of our flagship program, which is WAL, Water, Agriculture and Livelihoods. The villagers embrace this responsibility with enthusiasm, recognizing the vital role they play in ensuring the longevity and effectiveness of these water structures. PRI ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੋ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਲਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਗ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ। These water structures are not only benefiting the villagers but also enhancing local biodiversity. इस पॉन्ड पे ना 1000 से 1500 तक पशु पानी पीने के लिए आते हैं। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। While farmers are thus no longer left at the mercy of unpredictable weather cycles. जे पाणी आहे ते पाणी पूर्वी नदीला वाहून जायचं, तर त्या पाण्याचा असा फायदा झाला का जे सिमेंट बंधारे झाले
तर ते एक सीझन काढत होते शेतकरी. तर ते पाणी तिथं आता थांबल्यानंतर 2 वर्षापासून उन्हाळी सीझन म्हणजे दोन्ही सीझन निघायला लागले. त्याच्यामुळं शेतकऱ्याचा खूप फायदा झाला. The collaborative effort thus has contributed to significant strides in mitigating the problem of water scarcity. But affecting change in the lives of farmers also necessitated addressing the issue of disparities in landholding. Small and marginal landholders represent 85% of total agricultural households but own less than 44% of the cropped area in the country. Lacking proper equipment and using obsolete machinery, these farmers toil endlessly with minimal returns, struggling for modest yields. आम्ही पहिले पारंपरिक पद्धतीने शेती करायचो, ते काही जमायचं नाही. At Pernod Ricard, we believe in empowering our communities and enabling them to nurture sustainable practices. Our KSK program is a testimony of that approach. Through the KSK or the Krishi Sansadhan Kendras, we not only provide efficient farm equipment but also provide training to enable the farmers to imbibe practices which will help them to improve their crop yield and also result in a sustainable agricultural practices, thereby reducing the water and carbon footprint. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ਇਹ. ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ DSR ਜੀਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ. Equipped with the right tools, the farmers also required guidance on optimal agricultural practices. ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ SST ਅਤੇ PRI ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ. In today's rapidly evolving agricultural landscape, it's crucial for farmers to remain aware of the latest farming techniques. At PRI, WAL, which is Water, Agriculture and Livelihood, is our key intervention, wherein we are promoting sustainable and regenerative agriculture. For doing this, we promote package of practices, which is a comprehensive set of practices wherein farmers are capacitated, they are given hand-holding support from input to trainings to field demonstration as well as field exposure visits. POP ensures that farmers use better decision making in their agriculture and they use techniques which are more water effective, cost effective and gives highest yield. It also motivates other farmers to adopt these practices who are not associated with Pernod Ricard. Acquainting the farmers with the latest farming techniques has sparked a paradigm shift. PRI ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ. ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ. ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤੱਤ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਪਜ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. Adopting these new practices, farmers have seen significant improvements in their resource management and yields. पण आता PRI कंपनीचे मार्गदर्शनाखाली आम्ही शेती करायला लागलो. त्याच्यात आम्ही हे मल्चिंग पेपर, ड्रीप म्हणजे याच्यामुळं आम्हाला भरपूर फायदे, 50% फायदे, 100% फायदे झाले. कसं पाणी कमी लागत आहे आणि शेती व्यवस्थित होते. Additionally, organic farming practices have also enhanced soil fertility and reduced expenses. PRI अंकुर उदयपुर से 2 साल से जुड़े हैं. वर्मी कंपोस्ट है और ये गांडूल खत नहीं कराते हैं. 5,000 रुपये खर्चा आता था, उसमें हमारा 2-2.5 में खर्चा आता है. अंकुर उदय प्रोडक्ट के जो ऑर्गेनिक टीम है वो बार बार हमको फॉलोअप करते थे, या ऐसा करो ऐसा करो ऐसा. With sustainability holding the key to lasting positive change, the integration of innovative solutions assumes greater importance.
Thus, the introduction of solar pumps marks further strides towards eco-friendly and efficient farming practices. PRI ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਠੀਕ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। For true empowerment, the farmers also needed access to relevant resources and market opportunities. Under our WAL program, through the Farmer Producer Organization, or FPO as we call, we ensure that we enable the farmers by providing them access around information, resources, and the market channels, which in turn helps them to maximize the potential of their farm producers. An organization of farmer producers, FPOs help in collectivization of small, marginal and landless farmers, imparting them the collective strength to deal with any potential issues pertaining to their farm and non-farm activities. खेती संजीवनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के स्थापन करने से अंगूर के जो हमने खरीदारी की है उसमें पेमेंट का उनको एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट मिला है। धोखाधड़ी नहीं हो रही। बाकी जगह अगर वो देते हैं तो धोखाधड़ी होती है, उनका पेमेंट मिलता नहीं। 2 करोड़ 2 लाख का इस साल का टर्नओवर हमारा हुआ है। The holistic development of a community, though, can only be ensured when its women also have a voice. Through our program WAL, which is Water, Agriculture and Livelihood, creating better agency among women farmers has been of utmost priority to us. Taking them beyond the 4 wall has been a very, very crucial aspect of our program. We are working with these women farmers in agri-allied livelihood opportunities. Through our SCG model, which is the self-help group model, we are ensuring that they're part of the governance, and through our FPO, which is the Farmer Producer Organization, we are taking a step ahead. We are ensuring that women have at least 50% representation on the board of directors of any such farmer producer organization that Pernod has created in its journey in the last 5 years. Empowering women with training and knowledge contributes to boosting their confidence and capability. महिलाओं की ट्रेनिंग अटेंड करने से मुझ में डेयरिंग बढ़ गई है और मैं जो मजदूर रहते हैं उसका हिसाब किताब रखती हूँ। With each other to bank upon, the women gain control of their finances and lives. PRI कंपनी अंकुर उदय से जुड़ने के बाद हमें बहुत सीख मिली है। ऑनलाइन पेमेंट, चेक फाइलिंग का और हिसाब, घर का हिसाब रखने का, खेती के बारे में और कितना पैसा आता है, कितना नुकसान होता है, वो भी हमारा हिसाब चलता है। सरकारी योजना के बारे में सब्सिडियाँ से कैसा लाभ उठाना है वो भी हमें सिखाया है। The impact of these initiatives is evident in the improved quality of life for the farmers. PRI के साथ हम 3 साल से जुड़े हैं, जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में जानते हैं और हमने अपने 10 बैग लगाए हुए हैं। उसमें अपना खाद तैयार करते हैं जो कि हम अपना खाद सेल करते हैं। 50 क्विंटल खाद मैं अपने किसान भाइयों को बेच चुकी हूँ। अपना खेतों में भी खाद डालते हैं जिससे हमें 30-35 हज़ार का मुनाफा हुआ और हमारे घर का खर्चा आसानी से चल सकता है। हमारे बच्चों की पढ़ाई का भी आसानी से चल सकता है। The transformation from struggling to provide basic necessities to ensuring education and modern amenities reflects the impact of strategic corporate social responsibility efforts. It's a reminder of the profound difference businesses can make when they prioritize social welfare alongside economic prosperity. It's a great feeling being here along with the farming communities in the farmland, witnessing in practical the tangible impact that our WAL program is having on the communities. Seeing the resilience and the determination of the farming community amongst the various adversities they face and the positive impact and the tangible impact our program is having on the larger communities is highly satisfying. In the rural expanses of India, where every seed sown contributes to a better tomorrow,
the spirit of resilience and innovation stands out. Through collective efforts, sustainable practices, and technological intervention, a future unfolds where prosperity is achievable for all.